Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve the third problem of final account, intermediate first year accountancy. Now let us begin with our problem. It is telling that prepare trading account. Now business का नाम mention है, ना date mention है. So immediately after reading this, we'll draw the format, and that will be trading account of Mrs. Dash. इधर business का नाम नहीं है, इसीलिए हम नाम नहीं लिखे. For the year ending dash. क्वेश्चन में डेट मिसिंग है तो हम लिखे नहीं, राइट. एंड फॉर अकाउंट इट इज मैंडेटरी टू राइट DR and CR. particulars amount, this will be the format. Now let us begin with the first item of credit की तरफ सिर्फ दो आइटम्स रहते ट्रेडिंग अकाउंट में. व्हाट इज द फर्स्ट आइटम? द फर्स्ट आइटम इज सेल्स. देखो सेल्स कितना है 29,300. एंड बिफोर राइटिंग सेल्स वी नीड टू सी फॉर सेल्स रिटर्न. क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न है क्या? देखो है, दैट इज 300. अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न है तो हम क्या करते हैं, सेल्स का जो अमाउंट है ना वो हम इनर कॉलम में लिखते हैं. सो लेट अस सी दैट. सो बाय सेल्स 29,300 एंड फ्रॉम दिस 29,300 वी नीड टू सबट्रैक्ट सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न लेस करना है हमको. सो दैट इज 300 लेस सेल्स रिटर्न 300. 29,300 माइनस 300 इज नथिंग बट 29,000. ये आउटर कॉलम में अमाउंट आ गया सेल्स का. एंड द लास्ट आइटम ऑफ क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लास्ट आइटम क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है. सो क्लोजिंग स्टॉक इज 1,500. वी विल राइट क्लोजिंग स्टॉक ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. देन आफ्टर दैट इमीडिएटली विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड. अब डेबिट साइड का पहला आइटम रहता ओपनिंग स्टॉक. क्वेश्चन में है क्या? देखो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक मिसिंग है तो लीव इट, छोड़ डालो उसको. व्हाट इज द सेकंड आइटम? सेकंड आइटम इज परचेजेस. इफ यू लुक वेरी केयरफुली वी कैन सी कैश परचेजेस and credit purchases and purchase return. So what we have to do, just we have to find out the total purchases. अब वो कैसा आता? cash purchases plus credit purchases. First we'll write purchases. इसमें से cash purchases कितना है 12,500. credit purchases कितना है 8,500. तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे we'll get the total purchase, that is 21,000. and from this 21,000 we need to subtract sales return. Sales return कितना है 750. So what will be the total, what will be the net purchases? The net purchases will be 20,250. ये हो गया हमारा सेकेंड आइटम. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड परमानेंट आइटम, दैट इज वेजेस. वेजेस क्वेश्चन में देखो कितना है, बट वी कैन ऑल्सो सी सैलरीज. वेजेस एंड सैलरीज बोल के मेंशन है. तो सैलरी इज आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो इधर कंफ्यूज होना नहीं है. वी हैव टू गिव प्रियोरिटी टू द फर्स्ट वर्ड. पहले वर्ड पे फोकस करो, दैट इज वेजेस. तो इसको पूरे का पूरा वेजेस कंसीडर करेंगे हम. एंड वेजेस विल बी द आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. इसको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लिख देना है, दैट इज वेजेस एंड सैलरीज. द अमाउंट इज 1,400, राइट. सो नाउ लेट अस राइट ऑल द ट्रेडिंग एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. कैश परचेजेस हो गया, क्रेडिट परचेजेस लिख लिए. कैरेज किसको बोलते हैं? गुड्स उठा के कैरी करके गोडाउन में रखते वर्कर्स, ठीक है. सो अनलोडिंग द गुड्स फ्रॉम द ट्रक टू द गोडाउन, वो वर्कर्स को पेमेंट करना पड़ता, पैसे देना पड़ता. दैट एक्सपेंसेस इज टर्म्ड एज कैरेज. और गुड्स का हर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आता. सो वी हैव टू राइट कैरेज ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, that is 1,200. then after that wages and salaries हो गया. फैक्ट्री लाइटिंग, गुड्स का हर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फैक्ट्री का हर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. गुड्स और फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, राइट. सो ऑल द ट्रेडिंग एक्सपेंसेस मस्ट बी रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. सो विल राइट फैक्ट्री लाइटिंग, दैट इज 550. देन आफ्टर दैट परचेज रिटर्न, ये हो गया. सेल्स रिटर्न, ये भी हो गया. सेल्स हो गया, डन. ऑयल एंड फ्यूल की जरूरत किधर पड़ती है? फैक्ट्री में. कब? अगर पावर कट हो गया तो फैक्ट्री में जनरेटर्स रहते. टू रन दोज जनरेटर्स वी नीड ऑयल एंड फ्यूल. सो ऑयल एंड फ्यूल इज द एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री एंड all the expenses of factory must be considered on the debit side of trading account. So we will write
on the debit side, oil and fuel. Then after this, the next item is closing stock. Everything is done. Now what we need to do? We need to do the total. अब गौर से देखो, ज्यादा कौन सा दिख रहा? क्रेडिट साइड का ज्यादा दिख रहा. लेट अस डू द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड एंड दैट इज 30,500. ये टोटल ज्यादा है. जो टोटल ज्यादा रहेगा वो दोनों तरफ लिखना है हमको, क्रेडिट साइड भी डेबिट साइड भी. सो विल राइट 30,500 on the debit side also. And from this 30,500 we need to subtract all the items of debit side. डेबिट साइड के आइटम्स का टोटल करो और सब्ट्रैक्ट करो, तो आंसर क्या आता? ग्रॉस प्रॉफिट. सो द ग्रॉस प्रॉफिट इज 6,200. देन आफ्टर दैट इट इज आवर ड्यूटी टू ब्रॉट इट डाउन. कैरी डाउन लिखे बाद ब्रॉट डाउन करना हमारी ड्यूटी है. सो इट विल जंप फ्रॉम द डेबिट साइड एंड कम टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड बिलो द टोटल. इधर से कूद के टोटल के नीचे आ जाता है. Simple and easy. From this we have completed the third problem of trading account. The next video we're going to cover fourth problem of trading account. Till then, stay connected with Ranks. Thank you.